A very cheerful good morning to one and all present here. Respected Sister Ashirta, Vice Principal of St. John School, Sister Anupa, the in charge of St. John Kindergarten, sisters, teachers, and my all dear friends. A teacher is a symbol of love, creator of human society, source of inspiration and our guide. A teacher is always with us to provide us the light of education. My dear friends, as you know, we all are gathered here to celebrate Teachers' Day. So we wish A very happy Teachers' Day to all our teachers. This day is celebrated on 5th September every year to honor Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, a former president, vice president, most famous Indian teacher and philosopher. Today, we also remember a great saint, an amazing teacher and a lover of poor and downtrodden. She is none other than our beloved Mother Teresa. She was a real mother to the orphans, ex-patient, refugees, blind, disabled, alcoholics, poor, homeless, victims of floods and epidemics and famine. Let's bow our head before her and ask her the blessings to spend our lives too doing good for others. My dear friends, let's draw inspiration from these two great leaders. हमारे देश में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे कई हस्तियां हैं जिन्होंने आदर्श शिक्षक की मिसाल बनाई है। उनकी पूरी जिंदगी शिक्षा को समर्पित रही है। वो युवा पीढ़ी के स्रोत थे। उनका कहना था, अगर लोग अच्छे शिक्षक के रूप में याद करते हैं तो मेरे लिए यह सबसे बड़ा सम्मान होगा। शिक्षक के बिन ये दुनिया क्या, शिक्षक के बिन ये दुनिया क्या, कुछ भी नहीं, बस अंधकार यहाँ। शत नमन उन शिक्षकों को, शत नमन उन शिक्षकों को जिनके कारण रोशन है सारा जहां। The best way to start a day is to start with a prayer. So, let's start today's program with a prayer service. And for that, I would like to invite the students of Standard 9. Dear friends, we have gathered here in prayer to reflect upon. Dear friends, we have gathered here in prayer to reflect upon one of the most noble callings to which a person can commit himself or herself, to the calling to be a teacher. Let us unite ourselves with our teachers in our school and with the millions of teachers the world over in presenting their needs to the Lord. Now, I would like to call upon stage Sister Ashita, Sister Kavita, Sister Sajita and Sister Anupama and their representative of teachers to light the lamp. Presence of God as we are lighting the lamp and as we are led into a hymn by our friends. मेरे साथ
Saint Matthew. You are the salt of the earth. But if salt has lost its taste, how can its saltness be restored? It is no longer for anything, but it is thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A city built on a hill cannot be hid. No one after lighting a lamp puts it under the bushel basket, but on the lamp stand it gives light to all in the person in the house. In the same way, let your light be shined before others, so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. God understood our thirst for knowledge and our need to be led by someone wiser. He needed a heart of compassion, of encouragement, and patience. Someone who could accept the challenge regardless of the opposition. Someone who could see potential and believe best in others. So he met teachers. Yes, dear teachers, as we celebrate Teachers' Day today, we want to thank God for you, thank you, and pray for you in a special way. Thank you, my teacher, for being there at times when skies were grey. Thank you, my teacher, for lending an ear when I had things to say. You showered love on me lavishly when no one seemed to care. You brought me joys untold to fill my heart with moments of gold. I would have felt isolated and lonely if you had not been there. I lack the words to let you know how much you mean to me, but I will profusely thank God for you until eternity. Lord, we pray for our teachers. Dear friends, after each prayer, your response will be, Lord, bless our teachers. Lord, protect our teachers from dangers such as accidents and illness. Be their stronghold in the day of trouble. Keep them from the evil one, and give your angels charge on them to keep them in all your ways. Your response, Lord, bless our teachers. Lord, we pray that our teachers be gracious, full of compassion, and slow to anger, having great mercy, that they learn that a soft word turns away wrath, that they should not be envious but respect one another. Your response, Lord, bless our teachers. Lord, we pray that our teachers come to love and enjoy their students, that they be excited about teaching, and that they be just or fair in their grading and testing of their students. Your response, Lord, bless our teachers. Lord, we pray that our teachers may walk by faith and not by sight, that they would ask you for wisdom which you have promised to give liberally, that their lives would shine out light into a dark world, and that they would allow you to accomplish your purpose in their lives. Response, Lord, bless our teachers. Lord, we pray for our principal, Sister Anita, that she could set a standard based on a high morals and godly principles. We pray that together our staff would seek you and your purposes for their lives, that you could give them wisdom when making decisions for the school, that they treat the students with respect and truly care about their well-being, and that they may faithfully carry out the demand of this noble call to be teachers. After your divine and a gentle heart, we make this prayer in your most holy name. Amen. Dear friends, now we will together invoke the blessings of Lord upon our teachers as we sing a hymn.
Teachers Day, sir. Thank you. Happy Teachers Day. Teachers, please move to the respective places in front of the stage. सम्मान जिसे मिलता है हर व्यक्ति को सम्मान, जो करता है वीरों को निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान, ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम. Now I request our Vice Principal, Sister Ashita, Sister Anupa to come on the stage and garland the photos of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan and Mother Teresa. Dance is the hidden language of the soul. Every child is a different kind of flower. Altogether, they make this world a beautiful garden. तो आइए स्वागत करते हैं हमारे केजी स्टूडेंट्स का जो लेकर आ रहे हैं एक प्यारा सा डांस परफॉर्मेंस. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ इतनी सी हंसी
सुन तराने चुपके चुपके गाए आधी आधी पाठ ले आजा दिल की ये ज़मीन थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशियाना किसी हंसी किसी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाब की तिनको से चल बनाए आशियाँ देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई हे, देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई बारिश है या आसमान में छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं हाँ हम जैसे देखे ये जहाँ है वैसा ही जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ वक्त जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले सापा धारे गारे गमा पसा बम 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 बोले बम चिक बोले और मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोले बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोले थैंक यू लिटिल फ्रेंड्स। जल जाता है वो दिए की तरह, जल जाता है वो दिए की तरह, कहीं जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाता है। Now I would like to invite Koyal and her group for singing a song. आया
that our teachers always try to build moral qualities in us and they care for us. So, I would like to invite on the stage Ravi sir to deliver a speech. सेंट जॉन स्कूलच्या व्हाईस प्रिन्सिपल सिस्टर अश्रिता, तसेच किंडर गार्डनच्या प्रिन्सिपल सिस्टर अनुपा, तसेच सिस्टर कविता, सिस्टर सजिता आणि माझे सहकारी शिक्षक, शिक्षिका आणि शिक्षकेतर कर्मचारी. जो बनाए हमें इंसान, जो दे सही गलत की पहचान. जो बनाए हमें इंसान, जो दे सही गलत की पहचान. देश के उन निर्माताओं को मेरा शत शत प्रणाम. आज आपण शिक्षक दिवस साजरा करण्यासाठी एकत्र आलेलो आहोत. तर शिक्षक दिवस म्हणजे काय? तर शिक्षक क्षेत्रात दिलेल्या शिक्षकांच्या आदरार्थ जगभरात हा दिवस साजरा करण्यात येतो. जिथे शिक्षक आहे तिथेच विकास आहे. म्हणूनच शिक्षणातून व्यक्तीची जडणघडण करण्याच्या शिक्षकांचा आदर करण्याचा हा दिवस असतो. 5 सप्टेंबर हाच दिवस का साजरा करतात शिक्षक दिन म्हणून? तर भारताचे पहिले उपराष्ट्रपती आणि दुसरे राष्ट्रपती डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्मदिवस 5 सप्टेंबरच. शिक्षण क्षेत्रामध्ये यांचं असलेले एक अमूल्य योगदान, त्यामुळेच यांचा जन्मदिवस 5 सप्टेंबर शिक्षक दिन म्हणून आपण साजरा करतो. गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै न श्री गुरुवे नमः. या ओळीमध्येच गुरुचे महत्त्व आपल्याला विशद झालेला आहे. म्हणजेच काय, एक शिक्षक हा परमेश्वराच्या समान असतो. तर आपल्या या ठिकाणी एका ओळीमधून दिसलेला आहे. असंच एकदा संत तुकाराम महाराजांना एका तरुणाने विचारलं, महाराज मी एका खऱ्या गुरुच्या शोधात आहे, आपण मला याबाबत मार्गदर्शन करावे. यावर तुकाराम महाराज म्हणाले, खरा गुरु तेव्हाच भेटू शकेल जेव्हा आपण सर्वोत्तम शिष्य व्हाल. त्यावर तो युवक म्हणाला, महाराज खऱ्या शिष्याची ओळख काय? त्यावर तुकाराम महाराज म्हणाले, खरा आणि सच्चा शिष्य तोच असतो जो आपले सर्वस्व गुरुचरणी अर्पण करतो. जो पूर्णपणे गुरुला शरण जातो तोच खरा शिष्य. गुरुजींनी द्यावे ऐसे धडे आपला आदर्श ठेवणी पुढे. विद्यार्थी तयार होता चहूकडे राष्ट्र होईल तेजस्वी. या वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या ओवीचं छान असं या ठिकाणी त्यांनी ओवी लिहिलेली आहे. मी एक विद्यार्थ्यांकडून एक शब्दांची तडजोड करून काही ओळी बनवल्या आहेत. तर त्याची सुरुवात करूया किंडर गार्डन टीचरकडून. कारण की जसा कुंभार मातीच्या मडक्याला आकार देतो तसंच त्यांचं सुद्धा एक कार्य असतं की शब्दाची आणि अक्षराची ओळख नसणाऱ्या एका मुलाला ते घडवत असतात. तर त्यांच्यापासून सुरुवात करू. एका मुलाची ओळख शिक्षकाची एका अशा दिवशी होते, तो दिवस त्या मुलासाठी वेगळा असतो. कारण त्या दिवशी त्याचे आई वडील रडत असलेल्या मुलाला आपल्यापासून दूर पळवतात, ते पण एका अनोळख्या व्यक्तीकडे. आणि त्या दिवसापासूनच तो आई वडिलांचा तिरस्कार करतो. एका रडत असलेल्या मुलाला त्याच्या आईपासून दूर करण्यावाल्या तुम्हीच आणि दुसरी आई होण्यावाल्या तुम्हीच. त्याला ए फॉर ॲपल आणि झेड फॉर झेब्रा शिकवण्यावाल्या तुम्हीच आणि हक्काने रागवण्यावाल्या तुम्हीच. त्या छोट्या मुलाचा क्रश पण तुम्हीच, जेव्हा त्याच्या मनात आलं होतं की या मॅडम सर्व विषय शिकवतील आणि मी दिवसभर त्यांना पाहिल. जीवनामध्ये हे तेव्हापर्यंतच होतं जेव्हापर्यंत मनामध्ये भीती नव्हती. कारण नंतर जीवनामध्ये मॅडमची जागा सरांनी घेतली होती. मला सगळ्यात जास्त भय हे तुमचं होतं. वडिलांपेक्षा मी तुम्हाला जास्त भीत होतो आणि सगळ्यात पहिले शत्रू पण तुम्हीच होते. कधी मनात आलं सर कधी भेटा बाहेर. माझी शिकण्याची इच्छा सुद्धा तुम्हीच होते. मी काही करण्याची हिंमत सुद्धा तुम्हीच होते आणि माझे जवळूक पण तुम्हीच होते. आणि मी 10वी चांगल्या गुणांनी पास झालो म्हणून सांगत फिरणारे पण तुम्हीच होते. मी 5 मिनिटे लेट का झालो तर बाहेर काढण्यावाले तुम्हीच होते आणि मला वेळेचं महत्त्व सांगण्यावाले तुम्हीच होते. मी दुसऱ्याला क्षमा करणं तुमच्याकडून शिकलो.
जेव्हा वर्गामध्ये मोबाईलचा वापर करताना तुम्ही मला दुर्लक्ष केलं. वो कहते हैं ना, जिंदगी में हर कोई कुछ ना कुछ सिखाए जरूर देता है, ये टीचर्स भी कुछ ना कुछ सिखाई देते हैं. सही तरह चलना, सही तरह बोलना, सही तरह उठना बैठना, सही तरह पढ़ना, हर चीज सिखाते हैं. क्या करें, ये टीचर स्टूडेंट का रिश्ता ही बड़ा अजीब होता है. आखिर में ये एहसास होता है कि आज मेरा आखिरी साल है स्कूल का, तो उसी टीचर्स को गले लगा के रोते हैं, उसी टीचर्स को गले लगा के रोते हैं. या ठिकाणी मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी मॅनेजिंग कमिटीचे आभार मानतो. थँक्यू. Sir, for your inspiring and thought-provoking message. today is the better day to remind our teachers that how much we love and respect them. Now I would like to call Jayant and his group for a wonderful speech. सब कुछ समय के अनुसार ठीक चल रहा था, परंतु 2020 के वर्ष में कोरोना जैसे विषाणु ने पूरी दुनिया का ही चक्र जैसे घुमा दिया. तब सभी दुनिया अपने घरों में सुरक्षित थी. अपने घरों के दरवाजे उन्होंने सुरक्षित रहने के लिए बंद कर दिए थे. बट जो हमारा शिक्षक था, उसके सामने एक समस्या खड़ी हुई कि अपने विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाए, उनको कैसे शिक्षित करें. तब शिक्षक ने सोचा कि मैं मेरे बच्चे को यानी मेरे विद्यार्थियों को मैं ऑनलाइन शिक्षा देके उनको शिक्षित करूंगा. तब उनके सामने बहुत समस्याएं आई, उनके सामने बहुत जिम्मेदारियां आई, फिर भी उन्होंने अच्छे से उनका सामना किया. वो कैसे किया देखना है आप लोगों को, तो आइए दिखाते हैं आपको. चलिए देखना है ना. हाँ तो बच्चों, आज से हम अपना समय बर्बाद ना करके ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे. ठीक है? ठीक है सर. ओके सर. हाँ तो चलो बच्चों. चलो बाय बाय सर. कहाँ चलो? रुको, अटेंडेंस लेनी है. चलो बाय बाय. हाँ तो हम नाम पढ़ के ले रहे हैं. कौन प्रेजेंट है? तो कार्तिक. कार्तिक भी प्रेजेंट. प्रेरिक. प्रेरिक भी प्रेजेंट. अरे ई क्या लिखा है? शक्तिमान. शक्तिमान. चलो वीडियो ऑन करो अपना. शक्तिमान के नाम से आते हो. अरे इसके बगल वाला जेठालाल. जेठालाल हमारी क्लास में. चलो दोनों वीडियो ऑन करो अपना. सानवी कौन है ये? पता नहीं सर. पता नहीं. चलो दोनों वीडियो ऑन करो अपना. पेरेंट्स को बुलाओ अपने. अरे ई भाग गए. ई भी भाग गए. तुम दोनों को तो छोड़ेंगे नहीं, पता तो लगा के रहेंगे. हाँ तो बच्चों, अपने अपनी हिंदी की कॉपी निकालो. पेज नंबर 21. हाँ तो हम क्या पढ़ेंगे? अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर. अरे कितनी बार बताऊं? पेज नंबर 21. हाँ तो सर पेज नंबर. सर. अरे ये कौन चिल्लाया? सर मैं आपका स्टूडेंट प्रेरिक. हाँ बोलो बेटा प्रेरिक, क्या हुआ तुमको? सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही. मेरा नेटवर्क तो एकदम सही है. कार्तिक, तुमको मेरी आवाज आ रही है? एकदम बढ़िया सर. सानवी, तुमको? हाँ सर, मुझे भी आ रही है. तो फिर तुमको क्यों नहीं आ रही प्रेरिक मेरी आवाज? पता नहीं सर. तो मैं तुम्हें एक वीडियो भेजूंगा जिसमें मैंने अच्छे से सिखाया हो. ठीक है? यस सर. हाँ तो हम कहाँ थे? अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर. अरे कितनी बार बताऊं?
गया है तो सानवी मैं तुम्हें होस्ट बना देता हूँ और मैं लीव हो जाता हूँ। जब मैं वापिस आऊँ तब तुम मुझे होस्ट बना देना, ठीक है? कौन ठीक है बोलेगा? मैंने तो सबको म्यूट कर दिया है। अरे होस्ट तो मैं हूँ, मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ। अरे कोई मुझे देखेगा और सर भी नहीं। अरे आलू ला लो, कांदा ले लो, आलू ले लो। कोई है तुझे पर? आलू ले लो, कांदा। जब से तुमने आलू कांदा बेचना स्टार्ट किया है बिब्बा, जब पिटिया थी तब तुम्हारे पेरेंट्स आए थे, तब तुम क्या बोले थे? हमको इसरो जाना है, रॉकेट उड़ाना है और चांद पे भी तो जाना है। तुम चांद पे जाके आलू कांदा बेचोगे? अरे इसको कहो, ये तो पॉज हो गया। आज तो बच गई तुम कार्तिक। सर शायद वो भाग गया। भाग गया? इसको कुछ पढ़ाई नहीं करनी। हाँ तो आज मैं रीडिंग ही लेता हूँ। तो वरात अब तुम पढ़ो। पाठ नंबर 5, अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। और अनुनासिक में अंतर। हे भगवान, अब मैं इनको कैसे पढ़ाऊं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। Wow, this was a wonderful skill. Thank you. जब हम बच्चे कामयाब होते हैं तो सबकी नज़र हमारे परसेंटेज पे होती है। सब हमें बधाइयाँ देते हैं, सब हमारा अभिनंदन करते हैं, परंतु हमारी हर कामयाबी के पीछे हमारे शिक्षकों का बहुत बड़ा सहयोग होता है। So now I would like to call Tanvi from UKG to express her love and respect for the teachers. Everyone, respected principal, sister, teacher, and my dear all friends. I am Tanvi Kamble from UKG. First of all, I wish you all very happy Teachers Day. Teacher Day is celebrated on 5th of September every year in India to mark the birth of anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was an excellent teacher. We must thankful to our teachers for their support and guidance. Once again, I wish you all very happy Teacher Day. Thank you. Thank you, Tanvi. Now, I would like to call Bhavesh from UKG to give a speech in Hindi. Morning teacher और मैं मेरा नाम भावेश पंकजराव बालाजी। मैं यूकेजी लोटस में पढ़ता हूँ। मैं आपको शिक्षक दिन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। शिक्षक दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि भारत के पूर्व राष्ट्रपति महान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। हमारे जीवन, समाज और देश में हम शिक्षकों के योगदान को समझने के लिए हर वर्ष 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिन मनाया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं उन्होंने ब्रह्मा गुरु विष्णु उन्होंने देवा महेश्वरा उन्होंने शंकर पार्वती
तटमैत्री कुलवीर नमवा। ऐसे ही शिक्षकों का आदर करना चाहिए। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। Dance is the musical form which explains all the emotions in a very easy way. So please welcome Sneha and Anandi for beautiful dance performance. खराब करे आगलती बेहिसाब करे तो पल की जो नींद उड़ी पूरे सारे ख्वाब करे क्या करने हैं उम्रों के वादे ये जो रहते हैं रहने दे आने दो बार नहीं एक बार सही एक रात की कर ले तू यारी सुबह तक मान के मेरी बात तू ऐसे सोच ना जी आज ये घुंघरू टूट गए ये घुंघरू टूट गए क्या करने उम्रों के वादे ये जो रहते हैं रहने दे यादें दो बार नहीं एक बार से एक रात की कर ले तू यारी सुबह तक भाग मेरा ऐसे सोच नाची आज ये घुंघरू टूट गए ये घुंघरू टूट Really, it was an awesome performance. Dear teacher, you do all these things. You with a pleasant attitude. You are a teacher for all seasons and you have my gratitude. Now, I would like to invite the person who always give a right direction to every student and teacher of the school. She always motivates and encourages the students to give their best. It is my honor to welcome respected Sister Sajita to enlighten through her message. Sister, please. Eba, the animator and principal of kindergarten school. Reverend Sister Ashrida, the vice principal of St. John's School. Sister Kavita, teaching staff and non-teaching staff, and my dear students. A very good morning to one and all. As all of us know, we are here to celebrate Teachers' Day in anticipation. On this beautiful occasion, let me take the opportunity to convey my wishes to all our teachers who have given impeccable contribution in shaping the personality of our students. Every year, 5th of September, we celebrate Teachers' Day. It is a day filled with lots of excitement, joy and happiness as students are eagerly looking forward to tell their teachers how and why are they special to them. September 5th is the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, and the Teachers' Day is celebrated in commemoration of his birthday. He was not only the President of India, but also a great scholar and a teacher. Students across the country celebrate Teachers' Day to pay respect to their teachers. Teachers are the role model for them. Teachers are the backbone of our society. They play a key role in shaping and building students' personality and make them ideal citizens of the country. Teaching is a noble profession as teachers make a great impact on the growth,
development and well-being of the students and nation. Teaching is a noble profession. There is a saying that teachers are greater than the parents. Parents give birth to a child, whereas teachers mold that child's personality and make his or her future bright. Apart from academics, teachers stand by students at every step to guide, motivate, and inspire them for learning many good things. They are the source of knowledge and wisdom. The teacher has many important roles in the education of students, society, and the country. Quality of education is very necessary to fulfill the need of politicians, doctors, engineers, businessmen, farmers, artists, scientists in the country. Teachers constantly work hard to get through books, articles, etc., the necessary knowledge for society. He or she always guides the students and shows them the way for a good career. An ideal teacher should be fair and polite at all times without being affected by humiliation. Thank you, sister. Your precious words energize us and make us feel proud that we are the part of this institution. Now I would like to call Miss Tanaya for a wonderful dance. Dear teacher, thank you for your eagerness to teach and care for our children, helping us in educating them to be responsible, respectable people. It takes a special person
to be a great teacher. Now please welcome Miss Anandi to deliver her speech. गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. Good morning to all. My name is Anandi and I am in class 2. Respected principal, teachers, sisters, parents and my dear friends, wish you all a very happy Teachers' Day. Teachers' Day is celebrated on 5th of September every year in India. The first Teachers' Day was celebrated in India in 1962 on September 5th. It is the birth anniversary of Bharat Ratna Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was a great president, a great scholar and an excellent teacher. Teachers' Day is a best way for students to express love and respect for their teachers. Every teacher is a reflection of his or her students. Teachers are the backbone of our society. Dear friends, we should always obey our teachers' orders and follow their advice. A big thanks for all my dear teachers to guiding us, inspiring us and making us what we are today. Very good, Anandi. You really proved your love and respect for your teachers. Dance is the joy of movement and the heart of life. So I would like to call Divyani and Trupti for their dance performance. चतुर कामिनी काय म्हणू तुला तू हायस तरी कोण कोण होय होय कोण छबीदार छबी मी तुझ्यात उभी हजारानं लाईक्स माझ्या डीपीला छबीदार छबी मी तुझ्यात उभी भर मग मग माझ्या डीपीला छबीदार छबी मी तुझ्यात उभी हजारानं लाईक्स माझ्या डीपीला छबीदार छबी मी तुझ्यात उभी भर मग मग माझ्या डीपीला गरजत घालो गरजत फॉलो इंस्टा क्लिक करणं बटन नंबर मग्न थे अपना परानो all you boys just get this thing अपना परानो बिना फ्रेंडशिप लगना थे अपना परानो it's a different story अपना परानो आलिया पोरीची बारी रे आलिया पोरा बाजारी रे बघाच्या सारी नवी उडारी नारी रे त्याच्या संगीतात ऐकायचे अपना परानो all you boys just get this thing अपना परानो it's a different story अपना परानो मुझे बता जरा कैसा क्या दिल तेरा इश्क करम मग बाय 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 Dear friends, we enjoyed your rhythmic and beautiful steps. Our friend Anjali, by all means to acknowledge the role of a teacher in the life of every student. So, let's welcome her to the stage. गुरु शिक्षक शिक्षक म्हणजे जिथे वाद नाही संवाद आहे, प्रश्न नाही तर उत्तर आहे, पैसा नाही तर श्रीमंती आहे, ही जात नाही तर पंथ आहे, पंथ आहे म्हणजेच मार्ग आहे. Hello everyone, my name is Anjali. I am learning in 9th standard. Today
as we all are celebrating here Teachers Day, I would like to speak few words about a teacher. What is a teacher? गुरु. शिक्षक मतलब क्या? शिक्षक मतलब हर वो इंसान जिससे हम कुछ सीखते हैं, शायद इसीलिए हमारी माँ को हमारा पहला गुरु माना जाता है. फिर हमारी असली पढ़ाई, हमारा असली एजुकेशन तब शुरू होता है जब हम स्कूल में आते हैं. स्कूल में आने के बाद स्कूल के पहले दिन से लेकर कॉलेज के आखिरी दिन तक हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं. हमारे टीचर्स हमें हमारी एक पर्सनालिटी, हमारा एक व्यक्तित्व बनाने में मदद करते हैं. गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े कोट, भीतर से सहार दे बाहर मारे चोट. जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाते समय घड़े को बाहर से मारता है और साथ ही अंदर से सहारा भी देता है. मारता क्यों है? घड़े को पक्का बनाने के लिए. इसी तरह हमारे शिक्षक होते हैं. शिक्षक हमारे साथ सख्ती से तो पेश आते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका मकसद बच्चों को पक्का बनाने का होता है, बच्चों को एक जीवन में एक काबिल इंसान बनाने का होता है. वैसे तो सभी चाहते हैं कि हम जीवन में आगे बढ़े, लेकिन सभी ये भी चाहते हैं कि हम कभी उनसे आगे ना जाए. शायद हमारे माता पिता और शिक्षक ही होते होंगे जो सच में चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके भी आगे जाए. हमारे माता पिता और शिक्षक हमारे साथ पूरी जिंदगी तो नहीं रहते, कभी ना कभी हमें छोड़ ही देते हैं. तो छोडेंगे भी तो काबिल बना के ही छोड़ते हैं ना. जर आपण काही वाईट काम केलं किंवा काही चूक केली तर आपली आई आपल्याला मारते, मग त्याबद्दल आपल्याला वाईट वाटते. मग थोड्या वेळानंतर जेवण करून घे म्हणणारी पण आईच असते. तसंच शाळेत आल्यावर शिक्षक असतात. शिक्षक जर आपण काही चुकीचं केलं किंवा काही वाईट केलं तर आपले शिक्षक आपल्याला मारणार, कधी कधी वर्गाच्या बाहेर पण ठेवणार. गेट आउट ऑफ माय क्लास टीचर्स. तर बाहेर कशाला काढतात? आपल्याला पक्क बनवासाठी काढतात. मग आत ये म्हणणारे पण शिक्षकच असतात ना. आत ये म्हणणारे पण शिक्षकच असतात. TEACHER हा शब्द छोटा आहे. TEACHER हा शब्द छोटा आहे, पण याचा अर्थ सांगतो म्हटलं तर एका विद्यार्थ्याला मोठ्यात मोठी गोष्ट पण याच्या समोर लहान वाटायला लागतो. सामान्य शिक्षक सांगतात, चांगले शिक्षक स्पष्ट करतात, वरिष्ठ शिक्षक प्रात्यक्षिक करतात आणि महान शिक्षक प्रेरित करतात. वी डोंट हैव योर गुड टीचर्स बिकॉज यू हैव ग्रेट टीचर्स हियर. इतना बोल के मैं अपना कहना खत्म करती हूँ. अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा या फिर कुछ गलत कर दिया, कह दिया होगा तो प्लीज माफ कर देना. हैप्पी टीचर्स डे. शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. थँक्यू. Yes, Anjali, your words were clear evidence that you love and appreciate our teachers. Dear friends, now let's once again put our hands together to appreciate and encourage the participants of today's program. Come on, friends! Dear friends, we reached to the end of today's program. Now, I would like to call upon Yogita teacher to express words of gratitude. Very graceful morning to one and all present here. Respected Sister Ashita, Vice Principal of St. John Kindergarten, sisters, teachers, non-teaching staff, and my dear students. I wish you all a very happy Teachers' Day. On behalf of St. John School, Alipur, I am honored to propose vote of thanks. Should be able to make a human being who is powered by knowledge and learning. He said that teaching is a noble profession that shapes the character, caliber, and future of individual. All is well that ends well. A warm thanks goes to our respected Vice Principal, Sister Ashita, who always guides and motivates us to be positive in all aspects of life. Thank you, dear sister. I also acknowledge the support and inspiration we receive from Sister Anupa time to time. Thank you, dear sister. My most sincere thanks goes to Sister Sajida, who gave a wonderful message. It was a really motivational. A special thanks goes to 9th standard students who took all pain and efforts and make it a memorable one for each one of us. Under the guidance of Sister Ashita, Shital teacher and Yogita teacher. Thank you, my dear students. Thank you, Praveen sir, for your speech. It made us to rededicate ourselves to be better teachers. My heartfelt thanks go to our dedicated teachers.
who strongly believe that every child has its own potential to grow. I express a word of thanks to every participant of the day who made this day very wonderful, enjoyable and made to feel that we are loved by you all. Your cooperation and support will be ever be remembered and cherished. Thanking one and all, let me remain. Thank you. Though you write black and white, but it brings happiness in my life, color in my life. Happy Teachers Day once again. I am here to conduct some games. It is said that life is a game. All you have to do that is to know how to play. Let's start the game. So I request all the volunteers to put the chairs on the ground and my all dear friends to sit aside and make the place for the teachers.